Have a glorious morning, ladies and gentlemen. स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का मैच नंबर 82 युवा कबड्डी सीरीज 2022 और एक महत्वपूर्ण दिन होगा आज बूस्टर राउंड का। तो चलिए इस मुकाबले की हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे। सर्वप्रथम ये मुकाबला होगा पेरियार पैंथर्स वर्सेस मुरथल मैग्नेट्स के मध्य, यानी कि हमारी टॉप 2 टीम्स के मध्य। मुरथल मैग्नेट्स टॉप ऑफ द टेबल मौजूद है और पेरियार पैंथर्स अपना बहुत सारा समय वहां पर व्यतीत कर आई, यानी कि 1 एंड 2 पोजीशन के मध्य मुकाबला है। बहुत ज्यादा अंतर वहां पर अंक तालिका और अंकों में है नहीं, पॉइंट्स पर मैच में 0.22 का वहां पर डिफरेंस है। अगर आज निश्चित तौर पर ये दोनों टीम यहां पर एक जीत का स्वाद चखना चाहेगी। पिछले मुकाबले में बूस्टर राउंड में पेरियार पैंथर्स ने जरूर मुरथल मैग्नेट्स को हराया था मुकाबला, पर अब देखना होगा किस प्रकार की शुरुआत, किस प्रकार का जोश जज्बा और जुनून नजर आएगा दोनों ही टीम्स में। परंतु आज जोश जज्बा और जुनून जरूर होगा। डे नंबर 10 में हमने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज। पहला मुकाबला पेरियार पैंथर्स वर्सेस मुरथल मैग्नेट्स, दूसरा मुकाबला होगा हम्पी हीरोज वर्सेस काजीरंगा राइनोज के मध्य, तीसरा मुकाबला मराठा मार्वल्स वर्सेस अरावली एरोज और आज के दिन का अंतिम मुकाबला होगा पंचाला प्राइड वर्सेस टेडोबा टाइगर्स। तो चलिए एक बहुत ही एंटरटेनिंग डे आपका इंतजार कर रहा है, फेबुलस फ्राइडे। पर चलिए यहाँ पर समय है सर्वप्रथम हमारी दोनों टीम्स को इनवाइट करने का। तो चलिए हमारी पैंथर्स को बुलाने जा रहे हैं सबसे पहले पेरियार पैंथर्स। चलिए पेरियार पैंथर्स आ चुकी है मैट पर, तो ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे आपको। लेट्स इनवाइट मुरथल मैग्नेट्स। और चलिए पेरियार पैंथर्स के साथ हम शुरू करेंगे स्टार्टिंग 7 के साथ। आज बड़े बदलाव आपको नजर आएंगे, कुछ इंजरीज के चलते शायद वहां पर। जी हाँ, नितिन जागलान यहाँ पर रेड के डिपार्टमेंट को शायद संभालते हुए नजर आए। मनोज यादव, आशीष उमेद वहां पर मौजूद होंगे। अंकित द सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस, द प्योर ऑलराउंडर जरूर मौजूद है। रिंकू ये भी एक अच्छे रेडर और साथ निभाते हुए नजर आएंगे नितिन जागलान का। अनीश को आज कॉर्नर खेलना पड़ेगा क्योंकि आज निश्चित तौर पर वहां पर नवीन मौजूद नहीं। आशीष मलिक जरूर एक तरफ संभालते हुए नजर आएंगे। और चलिए कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री का यहाँ पर पक्ष संभालने के लिए मेरे साथ नवीन है और नवीन का स्वागत करेंगे एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में। Thank you, Harshit. Good morning and very changed look for the Pariyar Panthers, just allowing the top raider to get back into shape with the little injuries that he is carrying. But Murthal Magnets have the same strong side, the top of the table here. Vijay Kumar and Krishan Dhul, both the corners, and then Umesh Pawar is very good in raiding with Vinay Virender and supporting Ashim Malik really strongly. And yesterday we saw Manish Dhul and Sanjay Dhul come back into the top form for the covers. But it's the battle for the top of the table because Pariyar Panthers are just below the Murthal Magnets by 0.22 in that points per match, and now if Pariyar Panthers win, they will go on top of the table. But will Murthal Magnets allow? Arshit, who will be the men to watch out for? जी हाँ, ये है वो खिलाड़ी सर्वप्रथम अगर हम बात करें पेरियार पैंथर्स से। अंकित 104 टैकल्स हैं, 60 टैकल पॉइंट्स हैं, 6 हाई फाई नवीन और टैकल स्ट्राइक रेट की भी अगर हम बात करें 52.88 निश्चित तौर पर बहुत ही दर्शनीय खिलाड़ी। और अब आपसे जानेंगे कि आज आपके हिसाब से मुरथल मैग्नेट्स से कौन होंगे प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। Yeah, for me, Sultan of Surprises is there, but on the other hand, I will want Ashu Malik, of course, with 170 rate points, and I love the strike rate because the rate strike rate is 81. That allows him to not to put in more raids, and that is why Umesh Pawar and Vinay Virender becomes such a lethal combination and good mix because Vinay Virender is a left raider, Umesh Pawar is a right raider, so it's a very good mix that they've got. And first time, the Sultan of Surprises coming in for the toss, but losing it to Manish Dhul. Of course, he was the one who will be handling all the proceedings on the mat, even if Ashish Narwal was there. And it is nice to see that officially he is the captain now for the Pariyar Panthers. But talking about the team's performances,
top two sides, and they both have played well. जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा खेली हैं और सिर्फ 2 मुकाबले हारे हैं यहाँ पर मुरथल मैग्नेट। जिस प्रकार से प्रदर्शन रहा है, 17 मुकाबले 14 जीत, 2 मुकाबले हारे हैं, उसमें से एक पेरियार पैंथर्स से हारे हैं। और जब सर्वाइवल राउंड में मुकाबला था तो मुरथल मैग्नेट्स ने हराया भी था पेरियार पैंथर्स को। तो चलिए पेरियार पैंथर्स की खेमे की बात करेंगे आपसे नवीन। Yeah, they will want to have a little bit of a sweet revenge back on the Murthal Magnets because they lost it big time. Because Pariyar Panthers won this by 45 to 24. So of course Murthal Magnets will be asking in to come back to that revenge, and Ankit is all ready and looking in good shape and form. But the injury concerns will be there, so that's why they're just preserving their top defender Naveen Sharma and top raider Ashish Narwal to go into that challenger round. Now let's go to the all-important countdown. So match number Before the match 82. itself, Harshit, let me tell you this. If Pariyar Panthers can win this will be the first ever win for them without the top man, without the biggest raider of Yuva Kabaddi series, Ashish Narwal. Can they do that is a big question as Rinku walks in towards the Murthal Magnets. What do you feel, Harshit? I really want to know your gut feeling first, because I know you've had good breakfast and you're all set to give your prediction first up. Because if Pariyar Panthers win this without Ashish Narwal, that will be the first time that they'll be winning. यस बिल्कुल आपने सही कहा, और रिंकू पर वहाँ पर जिम्मेदारियां होगी, वहाँ पर जिम्मेदारियां होगी निश्चित तौर पर पेरियार पैंथर्स में, अंकित पर खासकर अनीश। परंतु देखिए फिर भी बहुत आसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल मैं कहना चाहूँगा। मुरथल मैग्नेट्स ऐसी टीम है जो युवा कबड्डी सीरीज में अभी तक सबसे कम मुकाबले हारी है, महज 2 मुकाबले हारते हुए नजर आए, जिसमें से एक जरूर पेरियार पैंथर्स के विरुद्ध हारा है। परंतु पहला मुकाबला जब इन दोनों टीम्स के मध्य हुआ था, जब मुरथल मैग्नेट्स ने पटकनी दी थी पेरियार पैंथर्स को, तो बहुत सही बात कही नवीन आपने कि अगर पेरियार पैंथर्स आशीष नरवाल के बिना जीती दोनों कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होगा, परंतु इतना आसान नहीं होगा। उमेश पवार रेड पर है अब। ठीक है, चलिए आपने जो वो मिर्ची भज्जी के अंदर वो सब स्टफिंग चाहिए था वो तो बता दिया आपने। अभी तलिए तो सही, अभी वो मिर्ची भज्जी को तेल में डाल के तलिए तो सही। मैंने आपसे प्रेडिक्शन पूछा था पहली बार। देखिए अब वो चिंगारी जला रहा हूँ ना, गैस भी तो जलानी पड़ेगी तलने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा समय 2-4 रेड का मौका दीजिए, 3-4 रेड दीजिए 5 मिनट। शुरुआती समय आप यही देखना चाहते हैं, दोनों टीम किस तरह से सेटल डाउन होगा, किस प्रकार से अग्रेसिव यहाँ पर दोनों टीम नजर आएगी। बट चलिए ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, आई थिंक मुरथल मैग्नेट्स थोड़े से प्रबल दावेदार है मुकाबला जीतने के। चलिए, तो आप हर बार की तरह जीत हुए घोड़े के पीछे भाग रहे हैं। चलो मैं अंडरडॉग के पीछे भागता हूँ, और आशु मलिक हैज गॉट दैट फर्स्ट पॉइंट इन हिज रेड एंड ही एक्चुअली डिस्टर्ब्ड द डिफेंस so much that the defense also had to change positions. Ankit could not go and surprise him, and he had to go back. And see, this is what happens when you do not have your best friend Naveen Sharma in your right hand. And the Sultan of Surprises of course escaped that, but Ashish Malik did not escape Ashu Malik's raid there. Now it is all time for Nitin Jaglan. Big responsibilities, ankle hold, and there you go down. And Harshit will be happy that Murthal Magnets is the team that he is vouching on today, and that ankle hold will be given Harshit very big happiness. देखिए पर नवीन, मेरे कुछ रीजंस वहाँ पर जरूर थे, जिस तरह से आज सबसे बड़े जो खिलाड़ी हैं, सबसे बड़े जो पैंथर हैं, निश्चित तौर पर अंकित ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, नो डाउट। परंतु जिस तरह से पेस को कंट्रोल करते हैं ना आशीष नरवाल, उनके पास वो, और यहाँ पर देखिए इसी तरह की पेस को कंट्रोल करेंगे आशु मलिक, बहुत अच्छा रनिंग हैंड टच वहाँ पर करते हुए नजर आए। देखिएगा जिस तरह से अंदर गए और अंकित शायद सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस को शिकार बनाया है। जी हाँ, यही कुछ कारण है। और देखिए वहाँ पर अक्सर जो अनीश है वो कवर पर बहुत अच्छा है, और आज उन्हें कॉर्नर संभालने का मौका मिल रहा है, और वहाँ पर बहुत स्ट्रांग है आशु मलिक हो, चाहे विनय वीरेंद्र हो या फिर उमेश पवार हो, कॉर्नर्स को लगातार शिकार बनाते। तो ये कुछ छोटे रीजंस हैं, जरूर यही देखना चाहते हैं हम भी कि पेरियार पैंथर्स विदाउट आशीष नरवाल अच्छा प्रदर्शन करे, अच्छी टफ कॉम्पिटिशन दे मुरथल मैग्नेट्स को। परंतु इस तरह से यहाँ पर डिफेंस खेलेगा तो कैसे पेरियार पैंथर्स को मौका मिलेगा नवीन?
Actually, Rinku was the first raider there who got that solo bonus point. But after that, no touch points, no tackle points, and then goes in very, very deep. But all credits there for Vijay Kumar to make sure the jump was ineffective. But the support came from Krishandul from the right corner, where Vijay Kumar went in for the tackle, but the support came in strongly from Krishandul, and Ashu Malik reduces another man on the court of the Pariyar Panthers, and Ashish Umed does not even understand what was he trying to do. No jersey pulling as well, and the outward turn from Ashu Malik gave him the opportunity to go in. But now it is Ashish Malik. Can he do the Malik of the Murthal Magnets? Can he revive somebody? Can he save the Pariyar Panthers? The biggest all-out, or rather the earliest and the quickest all-out in Yuva Kabaddi series for them. I haven't seen get them all out so soon. And that is the effect of not having Ashish Narwal and Naveen Sharma in the ranks. जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही जल्दी यहाँ पर पेरियार पैंथर्स ऑल आउट होते हुए नजर आएगा। महज 1 पॉइंट इनके खाते में है, और उसके पश्चात यहाँ पर अब जरूर वहाँ से बोनस मिला था तो निश्चित तौर पर 2 पॉइंट उनके खाते में हो जाएंगे, परंतु ये बड़ा ऑल आउट है और इसी की मैं बात कर रहा था। परंतु मुझे पता है, देखिए इसका भी मैं प्रेडिक्शन दे सकता हूँ, नवीन की पेरियार पैंथर्स वापसी करेगा और बड़ी वापसी कर सकता है, परंतु नितिन जागलान आप देखिए, इसलिए मैं कह रहा था पेरियार पैंथर्स नवीन कि अब वहां पर नितिन जागलान आपको राइट कॉर्नर पर नजर आए। No, Harshit, prediction is like a toss of the coin, either heads or tails. It is not chapati, it is not roti. आप दोनों तरह से उसको मतलब अच्छी तरह से पका के खा सके. No. Oh, what is this? Ankit, I guess, is crumbling under a little pressure of the captaincy. He did not understand that. Look at that. Oh my God. And once again, it is Krishandul coming in from that far corner, right corner, and putting across a very, very strong backhold on Ankit. And today, I guess the Sultan of Surprises is not at all ready for any surprises from his end. He is getting a lot of surprises from the other end. And Ashu Malik continues the great feast. Manoj Yadav could not even get across. और देखिए नवीन, अगर आप मेरे लिए कुछ भी बोलेंगे ना तो मुर्तल मैग्नेट्स से टॉलरेट नहीं करेगा, तो प्लीज आप भी थोड़ा। Oh my God. तो चलिए जोक से बात 12-2 ये अभी तक की कहानी रही है। शुरुआती 6 मिनट की 12-2 का स्कोर पेरियार पैंथर्स में। इसी की बात कर रहा था क्योंकि रिंकू को अब जिम्मेदारी स्वयं पर लेना होगा, जिस तरह से यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और कृष्णदुल शुरुआती फॉर्म में ही मुर्तल मैग्नेट्स का डिफेंस पूरी शुरुआती समय में जिस तरह से सर चढ़कर खेल रहा है, हाई लाइन डिफेंस खेल रहा है, विजय कुमार की दिशा में जाकर शिकार बनाना चाहते थे रिंकू। एम्प्टी रेड कर आएंगे, 4 का हाउस है। अब क्या उमेश पवार को यहाँ पर पिन डाउन करना चाहेगा पेरियार पैंथर्स का खेमा? No, they have to because they haven't got a tackle point yet, and it is almost 6.5 minutes into this game, and we have got only 2 bonus points from Pariyar Panthers. No touch points, no tackle points yet, and this is not what we want to see. But yes, the angle hold comes in strong for the first time, and in this match they've got a tackle point. The first tackle point coming in after a long time. Strong ankle hold on the left leg of Umesh Pawar. And that should somewhere give confidence to Rinku now. जी हाँ, निश्चित तौर पर अब फिर से यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण, और कहा भी था उस रेड की शुरुआत में कि उमेश पवार को जरूर पिन डाउन करना चाहेगा पेरियार पैंथर्स का खेमा, और शायद वहाँ पर आशीष मलिक मौजूद थे लेफ्ट कॉर्नर से। और कृष्णदुल आज बहुत अग्रेसिव, और विजय कुमार भी अग्रेसिव है, परंतु ये शुरुआत हो चुकी है। क्या ये मल्टीपल रेड पॉइंट्स नजर आएंगे नवीन आपको? Yeah, 2 points. The chain not working in tandem. Vinay Virendra could not go in for the ankles. See, when you go in for the chain tackle, if you are going for the block, you will have to go with the chain. But if you are going for the dash, and Ankit once again misses out, but Ashu Malik has known to keep the legs away from the strong surprises that comes in from the right end. Look at that. Ankit's mistake was nothing in this, but it is all Ashu Malik's brilliance that he jumped across and said, okay, I'm not going to give you my legs. That is really some skills. But yeah, just talking about the chain tackle once again, Harshit, if you go in for a block, I'm sure that you go for the chain. But if you actually are going into, tackle the defender by top and bottom, both different phases. So the left corner goes for the top and the infielder goes in for his legs. So then you do not have to have the chain. So there where Vijay Kumar and Vinay Virendra, I guess Krishandul and Vinay Virendra went in,
they did not have any understanding of what's going to happen. जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आप इस प्रकार से डिफेंस अगर करने जाते हैं चेन में तो आप निश्चित तौर पर यही चाहते हैं कि एक खिलाड़ी आपकी अपर बॉडी जो रेडर की अपर बॉडी है उसे अपना शिकार बना और साथ ही साथ दूसरा यहाँ पर इंश्योर करे कि अगर कहीं भी वो उसमें थोड़ी सी चूक होती है तो लेग आप होल्ड आसानी से के साथ कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने नवीन। और अब यहाँ पर नितिन जागलान जिनका मेन कार्य है रेडर के तौर पर खेलना, राइट कॉर्नर जरूर खेलते हुए नजर आ रहे हैं परंतु ये ताबड़तोड़ मनीष दुल का पावरफुल डबल एंकल होल्ड कह लीजिए आप। देखिए कितना पावरफुल है ये, Very powerful, and that surprise element. Nitin Jaglan showing that he is a little inexperienced, and Manish Dul utilizing the effect completely and did not allow Nitin Jaglan to even move. It was actually a solo tackle there. But Umesh Pawar needs to just keep the momentum going for the Murthal Magnets, but Pariyar Panthers will have to find a way out. Definitely not seen this team struggle so much, and that is that one big difference that will be happening for Mohit Huda's team. Yeah, but also let me tell you this: if they can at least put up a fight, Harshit, I'm sure they will, as you said, will come back and will make sure that they will go for the win. But if they can even put up that big fight, then they will have a lot of confidence even without Ashish Narwal. Now it's the first duo raid of the match, and it's come for Asif Malik, the Murthal Magnet. Oh! The ankle hold was slipped. The ankle hold was actually missed by Ashish Malik, and then he said, "Okay, मैं आपकी बारात लेके जाऊंगा, आपके कोर्ट पे आपको जाके छोड़ दूंगा." That's what Ashish Malik did. क्यों आप कष्ट करें ना इतना, और चलिए मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूँ। निश्चित तौर पर अच्छा प्रयास, और इसकी आवश्यकता नहीं थी पेरियार पैंथर्स को एक बार फिर से, और इसकी भी क्या आवश्यकता थी। कृष्ण दुल के एंकल होल्ड की ग्रिप हो, टाइमिंग हो, और जैसे ही यहाँ पर एंकल को अपने फ्रेम में देखते हैं जाने नहीं देते हैं। देखिए जिस अंदाज में यहाँ पर एंकल होल्ड किया और सही समय पर सपोर्ट आया वहाँ पर, मनीष दुल का सही समय पर सपोर्ट आया वहाँ पर, और जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे यहाँ पर कि कॉर्नर और वहाँ पर कवर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इस तरह से कॉर्नर कॉम्बिनेशन और कवर कॉम्बिनेशन बन पाता है। नवीन, इसके बारे में हमने कहा बहुत सारी चर्चा की थी, और इस बारे में भी आपके साथ चर्चा को बढ़ाना चाहेंगे इस पॉइंट के लिए। दो पॉइंट के लिए। Yeah, the ankle hold of Rinku was a perfect example of how to go in with the combination tackle, and this was a bad example of how not to go, with the combination when it is going wrong. That is the problem situation here for Pariyar Panthers, and they have been pushed into the all-out. Once again, the second time, Krishan Dhul today says, "Okay, if you do not come to me, I will come to you." And this is like the fourth time that in the match he has come charging across from the right corner, and Vijay Kumar had to just support him. That's all. Oh, what a lethal defense this is turning out to be. 21 Murthal Magnets, and it is just 5 points. I do not remember them getting a touch point. I guess only 3 points on the raid. Surprise! Good morning, Vinay Virendra, says Sultan of Surprises from the left in. Right, is that the way they're coming back? That's it. जी हाँ, ये वापसी हो सकती है। जिस तरह से यहाँ पर आपने बात की सुल्तान सरप्राइजेज, जिस तरह से इन्हें कहा जाता है, और निश्चित तौर पर एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर टैकल था और विनय वीरेंद्र के शिकार बनाना। और पेरियार पैंथर्स, नवीन ये मत भूलेगा कि जब ऑल आउट होती है उसके बाद ऑल इन एक नए अंतराल से एक नई पॉजिटिविटी के साथ आती है, और क्या यहाँ पर रिंकू भी उस पॉजिटिविटी को आने वाले समय में कंटिन्यू कर पाएंगे। देखिए वापसी बहुत ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। पेरियार पैंथर्स जैसी टीम जानती है किस तरह से वापसी की जाती है बड़े मुकाबलों में। Yeah, see, Rinku has to be mindful of two very, very important things. One, if he goes for the bonus, of course the ankle hold from Krishan Dhul is very strong, and he's experienced the bitter taste of it. But is the raider out? Yes, Sumanji says raider out. Sumanji says raider out, but it was a very, very valiant effort from Anish going in from the right corner for the dash. But she will consult her colleagues as well. But if Ashu Malik has been given this point, it's going to be disaster for Pariyar Panthers. Oh, look at that. I guess he has been pushed off the lobby, and then he reaches the midline. Raider out, 1 point. That is the decision that Pariyar Panthers will want to hear. But that is a very, very good tackle. Look at from where Anish went. And I'm liking to see this, because Anish generally the right corner is the right corner. He was in a correct position of the right cover,
And Ankit, the captain, I think has made the defense arrangement well, and now the raid points also coming his way. जी हाँ, बहुत अच्छे अंदाज से विजय कुमार की तरफ यहाँ पर बहुत ज्यादा अंदर गए। जानते थे यहाँ पर कि अभी हमारे पास मोमेंटम निश्चित तौर पर मौजूद है और बहुत ही खूबसूरती के साथ वहां पर गए और जल्दी रेड में इस तरह से जल्दी करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कभी कभार नवीन, क्योंकि जब आप ज्यादा समय लेते हैं शुरुआती 10 सेकंड में पॉइंट्स की अगर हम रेडर्स की बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स वहां पर मिलते हैं। Yeah, Harshit, just notice what is happening there. Right cover, it is Anish. That's a false tackle. That's a false tackle. Ashish Malik needs to pull up a real big one today, because I am liking what the defense setup has been rearranged by Ankit. Look at that. He's put Nitin Jaglan in the right corner and he's put Anish in the right cover. So that allows the right raiders to be pinned down very easily by the Pariyar Panthers' defense. That is what is required. But who will be stopping Krishan Dul today? Ankit went in too very close to him, and for the comfort of Krishan Dul, it is very, very easy for a defender who has not made even a single mistake today. He went very close to him. This is what I was telling you when Rinku will be coming into raid. He is that one left raider who can challenge and take upon Krishan Dul, but he has to be mindful of two things. One, with the ankle hold, not to let the bonus attempt go for the ankle. He should go in for the toe touch. He should not attempt the bonus. When you attempt the bonus, you are looking at the midline and then you are blinded for the defender to go in for the ankle hold. But when you go in for the toe touch, that is where you are having an eye on Krishan Dul and trying to do your best. And that is the time the cover also won't come to you. Yeah, now it is Rinku. Can I see a toe touch from him? But if he goes for that bonus attack, this is what he should not probably be doing, because he's got a bitter taste of the ankle hold. I should see somewhere the toe touch coming in very swiftly. Come on, this is what I was trying to say. This is what I was trying to say, and he's done the same mistake of going for the toe touch. In fact, the bonus, and then it is Manish Dul who's not made a mistake at all today. जी हाँ, बहुत अच्छा यहाँ पर डैश करते हुए और जिस तरह से ब्लॉक करते हुए यहाँ पर नजर आए, बहुत ही अच्छा एक बार फिर से मनीष दुल द्वारा। और आपने बिल्कुल वहाँ पर सही बात की कि जिस तरह से रिंकू एक लेफ्ट रेडर है, उन्हें ध्यान रखना हो कृष्ण दुल एंकल, और साथ ही साथ लगातार वहाँ पर बोनस के लिए जा रहे हैं, क्या टच पॉइंट की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा नवीन। और देखिए जिस तरह से उमेश पवार, क्योंकि अगर आप लगातार बोनस के लिए जाने का प्रयास करेंगे तो आप उसी फ्लैंक में लगातार शिकार बने। और इस बार जरूर देखना होगा उमेश पवार ने कितना अंदर जाकर प्रयास किया। अब नितिन जरूर वहां पर जाते हुए नजर आएंगे और इस चर्चा को निश्चित तौर पर हम थोड़ा सा और आगे लेकर जाना चाहेंगे। जिस तरह से देखिए नितिन जागलान भी आपको उसी दिशा में जाते हुए नजर आएंगे। राइट फ्लैंक में गए, महज रेड को लीगल किया, शायद डू और डायरेक्ट में खेलना चाहते हैं। जी हाँ, डू और डायरेक्ट में खेलना चाहते हैं, क्योंकि आशु मलिक आएंगे। 4 के हाउस में पॉइंट लाना मुश्किल होता है। अनीश वहां पर मौजूद है, आशीष उमेद वहां पर मौजूद है, नितिन जागलान वहां पर एक निश्चित तौर पर मौजूद है। मनोज यादव क्या होंगे, ये क्या बहुत अच्छा टैकल है, पावरफुल टैकल नजर आएगा, बहुत अच्छे अंदाज से सही तरीके से कॉम्बिनेशन। और मोहित हुड्डा, देखिए ये जोश दिखाओ भाइयों, दिस इज द जोश जज्बा जुनून। All marks for Nitin Jaglan, I should say, because he was the one who made sure Ashu Malik did not go to that midline with the top body left free. Yes, of course, the diving ankle hold was very nicely executed, but still Ashu Malik had the momentum towards the midline and his top body was left free. But Nitin Jaglan made sure he did not allow Ashu Malik to go in there. But now he's got all that important work to do to get some touch points in the raid. Even he's a left raider, so today it is going to be a tough task against the man who's already scored a high five in this game. Krishan Dul, 5 tackle points already for him, and Rinku and Nitin Jaglan are facing a lot of heat from that right flank, especially from that strong ankle hold that is coming in from Krishan Dul. And what Dul effect today, man, really, Harshit. Sanjay Dul, Krishan Dul, and of course Manish Dul, not to forget him, that everybody have put in the tackles, and I do not see any false tackles going against their name. And now let me see if he goes for the toe touch. It's a do or die. Come on, add some pressure or to already a hot pressure cooker, and the pressure cooker has been blasted away by Krishan Dul's running dash once again. और देखिए नवीन सिर्फ एंकल होल्ड में
वहां पर महारत हासिल नहीं की। और जिस अंदाज में, क्या बात है, कृष्ण दुल ने बहुत ज्यादा डिस्टेंस जरूर वहां पर ट्रेवल किया, जिस तरह से काफी समय तक भागते हुए नजर आए। और बहुत सही यहाँ पर देखिए डैश किया उन्होंने, तो किस बॉडी को अपना वहां पर शिकार बनाने का प्रयास किया, बिल्कुल वेस्ट से, यानी कि जितना नीचे यहाँ पर वो प्रयास किया था नवीन, जिस तरह से आप लगातार कहते हैं, वो उन्होंने इंश्योर किया, सुनिश्चित किया कि जितना नीचे से वो जाकर डैश कर पाए उतना ज्यादा बेहतर होगा। और बिल्कुल सही वो पोजीशन थी नवीन क्या एक डैश की। Very nice target of the lower half of the body for the dash by Krishan Dul today, and the timing of his charge. Okay, see, that has really impressed me today. Even for Ankit, even for especially when Nitin Jaglan also goes in for raiding. Every time, what has happened is the timing of Krishan Dul's charge has been spot on. I'll just talk about the timing a little later after this raid. It's a do-or-die raid for Umesh Pawar. He's trying to confuse the defense, but the defense should really maintain their decorum and also hold on to their horses. Oh, that was a nice escape in the initial one. That was a really nice escape as he pressed up and freed his ankles. But then the support came in very correctly at the right time. Ashish Malik this time not making any error, and Manoj Yadav pinning down Umesh Pawar for the first time. Pariyar Panthers are in the double digits. जी हाँ, जरूर शुरुआत में वहां पर अनीश ने जिस प्रकार से एग्जीक्यूट करना चाहते थे वो हुआ नहीं, परंतु उसके बाद बहुत अच्छा सपोर्ट आया। और इस बार अगर सपोर्ट आएगा तो एक बड़ी रेड होगी, अंकित के लिए एक बड़ी रेड यहाँ पर होते हुए नजर आ सकती है। क्या मल्टीपल रेड पॉइंट्स, जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा एडवांस यहाँ पर इनसे गए थे शायद खिलाड़ी। जी हाँ, इनसे वहां पर विनय वीरेंद्र सरप्राइज करना चाहते थे, अंकित को उन्हीं के फूड का टेस्ट यहां पर कराना चाहते थे, परंतु अंकित जानते थे कि किस तरह से बचना है। बहुत अच्छा वहां पर अपने आप को मिड लाइन की तरफ, देखिए जिस तरह से उन्होंने थोड़ी सी हाफ जंप लगाई और मिड लाइन की तरफ अपना फोर्स बनाया, ये रेडर को सीखना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। और साथ ही साथ जाते जाते एक और खिलाड़ी को अपना शिकार बनाया। फुल का हाउस है, ये प्रोबेबली द लास्ट रेड ऑफ फर्स्ट हाफ। आशु मलिक अच्छा प्रदर्शन रहा है। Here he should not be given a touch point. Here he should not be given a touch point. I'll tell you, because this is the last rate of the first half, and to start the second half proceeding, Murthal Magnets will be Krishan Dul, the man who has been really dangerous today for Rinku and Nitin Jaglan. So, without having Krishan Dul on the right corner, if Rinku can start the second half with speedy and snappy raids, with the swiftness of the footwork and going in and attacking the defense, then Pariyar Panthers have a way to come back. Will Rinku do that? Is a big question. He's got the opportunity to do it. He's got the skills to do it, and it also has a lot of confidence to do with Nitin Jaglan, where he will not have Krishan Dul. That's the first time Krishan Dul has been sent out on the bench by Ankit. He did not have any. Look at that strong ankle hold that we are just looking in some highlights in the first half. And even with the ankle hold, the blocks, the dashes, the way, this is what I was trying to tell us, the initiation of the dash, or the charge of the dash that happens from Krishan Dul is on the right target. Look at that. The moment when the raider goes towards the right corner, he's been completely blinded, and then the speed of Krishan Dul today has somewhere not allowed the raiders to cope up with the tackle. जी आज बहुत ही मैजिकल नजर आया कृष्ण दुल निश्चित तौर पर, एक बहुत अच्छा यहाँ पर टैकल किया था मनीष दुल ने बतौर कप्तान, ये भी बहुत सक्सेसफुल नजर आए। और एक बार फिर से कहानी कुछ इस प्रकार से रही कि आशु मलिक ने 8 पॉइंट प्राप्त किए और कृष्ण दुल ने 6 पॉइंट। एक बार फिर से मुरथल मैग्नेट्स अपना खेमा संभालते हुए नजर आया। अंकित को जरूर कुछ टैकल पॉइंट्स यहाँ पर मिले। इस बार भी अगर हम देखें तो आशु मलिक को जरूर अपना शिकार बनाया था, और ये देखकर अच्छा लगा था कि अनीश अपनी एक बार फिर से वही पोजीशन में आ गए थे, परंतु उमेश पवार ने एक बार फिर से जब टीम को आवश्यकता रही है, और ये है वो कुछ पावरफुल ब्लॉक्स हो, पावरफुल वेस्ट होल्ड हो, आज जहां पर गए बिल्कुल सोने पर सुहागा रहा है कृष्ण दुल के लिए। तो क्या आज वो लकी डे है? 6 टैकल पॉइंट्स ऑलरेडी वो प्राप्त कर चुके हैं। नवीन अभी कहना जरूर थोड़ा सा जल्दी होगा, परंतु क्या आज आपको लगता है कि कृष्ण दुल जब ये मुकाबला अपने लिए समाप्त करेंगे, क्या डबल डिजिट टैकल पॉइंट्स ले सकते हैं नवीन? Almost there, but this act is the turning point of the first half for Pariyar Panthers, where Krishan Dul is not on the court for beginning the second half. So that should be the small window where the Pariyar Panthers, especially Rinku, should be targeting, and Nitin Jaglan should be doing it. So the tackle points is the winner for Murthal Magnets, and only 5
for the Pariyar Panthers as we just slip into a short little break and see in the second half if the absence of Krishan Dhul will be utilized by the Pariyar Panthers or no in just a short while from now. तो चलिए अब सेकंड हाफ के दौरान स्वागत करना चाहेंगे एक बार फिर से आप सभी का। और टॉस निश्चित तौर पर यहां पर जीता था जिस तरह से मुर्तल मैग्नेट से, तो पहली रेड इन्हीं की रहेगी। एक बार फिर से आशु मलिक कितना अंदर जाने का प्रयास करना चाहेंगे। आशीष मलिक के पास से यहाँ पर बोनस लेने का प्रयास है, बोनस बड़ी आसानी के साथ प्राप्त करेंगे। और रिंकू नहीं, अंकित यहाँ पर रेड की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। एक अच्छा मौका जरूर है, संजय दुल जरूर राइट कॉर्नर को यहाँ पर संभालते हुए नजर आएंगे। और इस बार संजय दुल ने कहा कि अभी तक फर्स्ट हाफ में मेरे पास कोई पॉइंट नहीं था, परंतु शायद लीजिए आप सेकेंड हाफ की शुरुआत मेरी टीम के लिए मैं करूंगा एक पावरफुल डैश के साथ। और मेरे साथ जुड़ जाएंगे नवीन कमेंट्री बॉक्स में। Harshit, that's a trick that has been missed by Ankit. The trick has to be you send in Rinku, because see when you had the advantage of raiding and you had Nitin Jaglan, you had Rinku on the bench, on the mat, and you did not allow him to go ahead. Somewhere a trick has been missed there by the Pariyar Panthers as Ashu Malik once again cleans up Nitin Jaglan, right, as Sumanji watches it very carefully. Now Rinku goes in, come on. But even now there is some situation that he can turn it upon, because there is still no Krishan Dhul. So nothing has been lost, because Umesh Pawar is there in the right corner, so not a problem, and Ashu Malik is there in the right corner. Now come on Rinku, go for the toe touch. You cannot be having a bonus attempt even if there is no Krishan Dhul. It's just two defenders. Come on. जी हाँ, यही आप थोड़ा सा और देखना चाहते थे कि देखिए जब कृष्ण दुल ने लगातार वहां पर बहुत अच्छे बोनस की, बहुत अच्छे टोटजेस का प्रयास किया था, और उमेश पवार के विरुद्ध ये ट्राई कर सकते थे। उमेश पवार के विरुद्ध क्योंकि रेगुलर राइट कॉर्नर भी नहीं है, अच्छे डिफेंडर जरूर एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर उभर रहे हैं अपनी टीम के लिए, परंतु ज्यादा वहां पर आपको मौका था, हाई परसेंटेज आपके पास मौका था कि आप अपनी स्किल से पॉइंट लेकर आ पाए, क्योंकि द मैन इन फॉर्म कृष्ण दुल शायद नहीं थे। अब जरूर शायद क्या आ जाएंगे। जी नहीं, अभी टच पॉइंट लाने मांग की थी परंतु नहीं मिला। Yeah, thankfully there for the Pariyar Panthers. But now the only man not on court is the man who's performed exceptionally well today. And now with I do not understand why even we are having the discussion of not sending a left raider again and again. It is that small little kabaddi smartness that is required. Of course, I understand Ankit is not on the mat, but what is Rinku trying to do? Rinku could take some charge. See, that is where the difference lies here, Harshit, where you turn out to be superstar from a super lad. That is what is important. How do you gauge the situations? And that is what Yuva Kabaddi series teaches you. It teaches not just the strategy skills, but also how smart you are, how rightly you take your decisions on the kabaddi mat. Even now, Rinku has a chance. And in a do-or-die raid. Come on. Now let me see if he has got some of that strong maturity to get a touch point from the right corner. He's got the bonus. Umesh Pawar gives him the bonus and says, go back. इस बार जरूर यहाँ पर बोनस मिला, परंतु यही मेरा प्रश्न और जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे थे वहां से नवीन की क्यों पिछली रेड में अनीश आते हुए मुझे नजर आए थे। उमेश पवार अब जरूर देखना होगा डू और डाई रेड में कितना अंदर जाएंगे, क्या वहां पर अनीश को भेजने की आवश्यकता थी। और इस बार ये पावरफुल है, ये पावरफुल डैश है, ये नंबर 11 जर्सी। चाहे आज उनके लिए आशीष नरवाल मौजूद नहीं है, परंतु ये आशीष उम्मीद कहेंगे कि चलिए उम्मीद अभी भी बांधे रखिए पेरियार पैंथर्स के फैंस। उमेश पवार को जिस तरह से डैश किया है, हो सकता है मुर्थल मैग्नेट्स को भी इसी तरह से डैश कर दें और मुकाबले में वापसी कर लें। और वापसी मैट पर कर रहे हैं अंकित। संजय वहां पर लेफ्ट राइट कॉर्नर संभालते हुए नजर आएंगे। विजय कॉर्नर वहां पर लेफ्ट कॉर्नर में देखना हो कितना ज्यादा अंदर जाने का प्रयास रहेगा अंकित का। 67 रेड पॉइंट्स है उनके पास इस मुकाबले से पहले, और परंतु इस बार फिर से dash. He went in very deep, but somewhere who was very slow on the turn. He went in deep, got the hand touch. There you go. Vinay Virendra got the hand touch there, but Manish Dhul had that extra bit of time where Ankit was a little slow in turning, because he went in deep and he should have just turned a little more quicker. Yeah, it's nice to just sit in the AC commentary box and say all this
very correctly. But I understand it is tough to play on the mat. But yeah, that's what happens. You know, just trying to say where it went wrong, and Ashraf Malik has been pinned down from midair. What a strong tackle, what a strong tackle. देखिएगा जिस तरह से यहाँ पर लो जरूर थे, उसके बाद वहाँ पर खड़े होते हुए नजर आए. बहुत लंबी जंप जरूर थी निश्चित तौर पर वहाँ पर आशु मलिक के, परंतु जिस तरह से वहाँ पर अनीश ने ऐसा लग रहा था कि उनका सर जरूर नीचे था, परंतु अपने हाथों के जरिए जिस तरह से उन्हें ब्लॉक किया और उसके बाद इंश्योर किया, पूरी टीम का भी वहां पर सपोर्ट आया पेरियार पैंथर्स के लिए. ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि अनीश भी यहाँ पर अपनी टीम के लिए लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. Yeah, and also see who's been revived. See who's been revived in the right corner. It is Krishan Dhul who's come back into the mat after after Ankit was dashed. So back hole, Vinay Virendra says he's got 2 points, and Ashish Malik today has been really struggling. Back hole came in nicely, but Vinay Virendra was almost there, going towards the midline, and the turn and tumble effective very correctly. Now Rinku has got all problems, Arshit. He's got all the problems in the world, and he will not go for the toe touch. He will even just try and show his footwork, because I do not I'm a little skeptical about has he got it in his armory, because we haven't seen it. Because the running toe touch, we haven't seen it. Look at that. When you are so confused about your footwork, the defense says, okay, I've got a full meal in front of me. जी हाँ बिल्कुल. और इससे पहले अभी आपने एक और वार्ता पर यहाँ पर बात की थी. ये आज रिंकू ने अपने जो आर्मरी में इनके पास मौजूद है वो दिखाया ही नहीं है. सिर्फ ऐसा लगा कि टो टचेस बोनस के लिए महज गए. आज ना वो रनिंग एंड टच की ज्यादा मांग की है, ना किक लगाते हुए नजर आए, ना ज्यादा टर्न करते हुए नजर आए, और तेजी से गए भी नहीं हो. परंतु इस बात देखना होगा, क्या ये आशु मलिक की हीरोइज्म में रेड हो सकती है. शानदार सिंगल था, योल जरूर है. क्या स्ट्रगल है आशु मलिक का, क्या शानदार टैकल जरूर, परंतु क्या ये विश्वसनीयता नजर आए हमें कबड्डी की. सुपर टैकल, और जिस तरह के चेहरे पर मुस्कुराहट है यहाँ पर रेफरीज के, उसी तरह के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई कमेंट्री बॉक्स में भी. Very much strong ankle hold, and from the back line he pulled up 3 defenders to touch the midline but did not cross it. Oh, that is a Herculean raid by Ashu Malik, but unfortunately he has to go back on the bench and take some breather, take some water to cool himself down. Oh, that was really heart-stopping. But all again, credits to Anish, who came in at the right time and lifted Ashu Malik off the mat. Now that was very important. He was almost there. From the back line, he dragged 3 people towards the midline. And that was as if saying, nahi, apun jhukega nahi. But then, what happened was Anish said, nahi, bhai, tu jhukna mat, main tujhe उठा लूंगा. जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने. बिल्कुल सही समय पर अनीश का वहां पर आना, आशीष उम्मीद का वो जरूर सुपर टैकल था, परंतु जिस तरह से अनीश ने सही समय पर आकर वो जो अपर बॉडी को मिड लाइन से मोमेंटम को दूर किया. और कभी कभी ये डिफेंडर्स के लिए सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप बल का तो प्रयोग करें, परंतु उसके साथ साथ आप मानसिक बल को भी अपना दर्शाएं, और जो ज्यादा जरूरी है वो करें. इस बार जरूर अंकित शायद अपना शिकार बनाएंगे मनीष धुल को. कैप्टन वर्सेस कैप्टन है यहाँ पर. इस बार लगातार मनीष धुल अभी तक वहां पर अव्वल दर्जे का नजर आ रहे थे, परंतु इस बार अंकित का बहुत अच्छा. और इस बार फिर से वही था, थोड़ा सा इस बार ये था कि टर्न लेने में उन्होंने इतना समय नहीं लगाया जो हमने पहले बात की थी. वो थोड़ी सी जल्दी नजर आया, और जिसके चलते वो एक्स्ट्रा सेकेंड्स कम मिले वहां पर मनीष धुल को. Correct. Rightly figured out, Arshit. Rightly figured out. Yeah, that is what did not happen in the previous time when the dash was successful. And now Ankit says enough is enough. Come on, let us put up a fight, guys, and let us show this Murthal magnets that we are here to play even without Ashish Narwal and even without Naveen Sharma. And that is nice to see. Ankit putting up quick raids, snappy ones, and then also putting up surprise tackles. Now this will be a big discussion coming in from Mohit Huda, and he will be really telling Ankit and also especially Manoj Yadav to go in for the tackles hard and strong. Yeah, that is what they want. Yeah, that is what they will be saying. And in the raid points, I really want Rinku to understand something. But let me tell you, if there is Monu Jakar, why is Rinku still on if he is not really confident and not moving swiftly, Harshit?
Monu Jakar is there on the substitution bench. He's a very, very good raider. We have seen that. Can Mohit Hooda bring in Monu Jakar? जी हाँ, ये चर्चाजनक विषय हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर रिंकू का आज दिन बतौर रेडर इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा, लगातार टैकल होते हुए नजर आए, और क्या इस बार विजय कुमार कहेंगे कि चलिए आखिरकार आप मेरे स्लॉट में आए हैं, आपका लेग वहां पर मेरे स्लॉट में होता हुआ नजर आया है। तो एक बहुत ही अच्छा एंकल होल्ड, जिस तरह से वहां पर अंकित बहुत ज्यादा अंदर चले गए थे, बहुत ज्यादा अंदर चले गए थे। No, he was right in going inside, Arshit. He was very right in going inside. But what had to happen was he had to immediately use the lobby. You know, he know that the ankle hold had come in from Vijay Kumar. He did not use the lobby and he was trying to go towards the midline from the court. And that gave that extra angle for the support staff that came in and pushed him away. Now that is what, again, there is a little bit of strategical error that is coming in from the captain of Pariyar Panthers. But I really want to see some change in the raiding department. It's still 10 minutes left. It's not a big lead considering the time that is left, and considering even Monu Jakar is there to raid. I really want Nitin Jaglan or even Rinku somewhere to be, given a rest and bring in Monu Jakar. Very, very important. I'm sure Nitin Jaglan also has not done that well, but at least he showed some intent. I'm being a little harsh here, Arshit. I know you will not like it, but yeah, I really want to see a fight from the Pariyar Panthers. देखिए हम सभी यही चाहते हैं ना, देखिए हम सभी यही चाहते हैं कि कबड्डी का बेहतरीन खेल हमें देखने को मिले। देखिए किसी न किसी टीम को जीतना है, किसी न किसी टीम को हारना है, ये हम जानते हैं, हालांकि टाई भी हम देखते हैं, परंतु आप यही देखना चाहते हैं कि कबड्डी का खेल दोनों टीम से नजर आए। और देखिए खेल से ज्यादा मैं इंटेंट देखना चाहता हूँ। आप पेरियार पैंथर्स और नवीन, मैंने जो शुरुआत में बात की थी ना, मैंने यही कहा था, इसलिए कहा था कि आशीष नरवाल का मैट पर होना पेरियार पैंथर्स के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बतौर कप्तान बहुत अच्छा अपनी टीम को लीड करते हैं, और ये अच्छा मौका है पेरियार पैंथर्स के पास। कैसे भी अगर आशु मलिक को थोड़े समय के लिए अगर आउट ऑफ कोर्ट रखेंगे तो उन्हें मौका मिलेगा। मुरथल मैग्नेट्स के विरुद्ध उन्हें इस मुकाबले में आने का मौका मिलेगा। उन्हें सोचना होगा कि आशु मलिक को आप ऑफ कोर्ट रखिए, बेंच पर उन्हें थोड़ा समय व्यतीत करने दीजिए। Nice. This is nice. They left him completely in, and Mohit Hooda is happy of what Anish has done from the right corner, and he made sure that he went in straight towards Ashu Malik. He did not have that lateral angle to allow him to move, and it is nice to see the tackle there. But somewhere it is now on Nitin Jaglan to get a touch point. It is very, very tough. You are up against Krishan Dhul, who is not given away even a small, inch of gap for the Raider to score against you, and he will not give it. He will not give it. Forget an inch of gap. There is not even a breathing space for Nitin Jaglan that time with the block. और नंबर 4 जर्सी कृष्ण दुल एक बार फिर से जिस तरह से आज उनका प्रदर्शन यहाँ पर जारी है, बहुत ही एक्सेप्शनल प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर। जिस तरह से देखिए 8वां पॉइंट है कृष्ण दुल का, ये नवीन 8वां टैकल पॉइंट वहाँ पर इस खिलाड़ी ने प्राप्त कर लिया, और लगभग 7:30 पौने 8 से 8 मिनट का समय यहाँ पर शेष है। उमेश पवार अब शायद ये चाहेंगे, 14 पॉइंट्स की लीड आ चुकी है, तो अब थोड़ा सा गेम को जो आशीष नरवाल बहुत अच्छा करते हैं, पेरियार पैंथर्स बहुत अच्छा करती है, थोड़ा सा मोमेंटम को स्लो डाउन किया जाए, समय को वहाँ पर क्लिक किया जाए, क्लॉक डाउन की जाए, और शायद उमेश पवार यही करते हुए नजर आएंगे और इंश्योर कर रहे हैं। देखिए पूरे 30 सेकेंड लेने लिए हैं। Yeah, it's getting the medicine of your own strategies. That is what Umesh Pawar did it, and Pariyar Panthers wouldn't have saved this or experienced this kind of a pressure from any opposition, at least in the booster round. But I am really, Arshit, I guess you guessed it right in the beginning, but I was hoping that Rinku will do something else today, but he's looked very, very cool. He's not having it under his stride to go for the snappy raids, and very lackluster performance from him. जी हाँ बिल्कुल, आप इनके पिछले से पिछले मुकाबले के हाइलाइट्स उठाकर देख लीजिए, उसमें लगातार उड़ते हुए नजर आएंगे, परंतु आज एक अलग रिंकू नजर आए। देखिए ये बिल्कुल आपने सही कहा था, नवे की कमेंट्री बॉक्स से बैठे बैठे बोलना बड़ा आसान होता है कि आज वो ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, अपनी बेहतरीन फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। और देखिए कोई खिलाड़ी नहीं चाहता यहाँ पर ऑफ कलर होना, परंतु आप ये देखना चाहते हैं कि रिंकू लगातार सार्थक प्रयास करें, वो फुटवर्क उनमें नजर आए, वो तेजी उनमें नजर आए, और यही हमारा कार्य है ना कि हम सिर्फ जो हमें दिख रहा है उसे प्रॉपर बता पाए, जिससे कि आने वाले रेडर्स को भी वहां पर पता चले। टोटली ब्लाइंड,
क्या करूं, अनीश ने कहा कि यहाँ से ये चक्रव्यूह बन चुका है और चक्रों में वे फंस चुके हैं। मुरथल मैग्नेट्स, क्रिशन दुल्हो, उमेश पवार हो। trying to tell you. Yeah, that is what I was trying to tell you there, Harshit. The charge, especially when Krishan Dul starts his charge, no, it is at the right time. He always has an eye on the radar, and especially watching where the movement of the radar goes. Now it's a super tackle situation, do a raid, and nothing can affect Ashim Malik. Mohit Hooda Saab has to just put his hand on his head and say, okay, fine. Where is Ashish Narwal? Let me at least call him and speak to him. जी हाँ, इसकी आवश्यकता भी है। परंतु मैं देखिए नवीन, मैं चाहूंगा सच में कि पेरियार पैंथर्स एक और मुकाबला आशीष नरवाल के बिना खेले, चाहे एक जीत के बाद खेले, चाहे मोमेंटम आने के बाद खेले, परंतु मैं देखना चाहूंगा क्योंकि आप चाहते हैं जब आप बड़े मुकाबलों में जाएं तो वहां पर मान लीजिए, चलिए अभी तो इंजरी का महज वहां पर कॉज है, आशीष नरवाल वहां पर मौजूद नहीं है और इस बार फिर से Ashu Malik, in fact, no, if I would, Ashu Malik gets a running hand touch. Yeah, once again there will be all out for sure. But yeah, just talking about that point, Arshit, very good point that you made. Where even after this match, if I could get a sense of Mohit Hooda, what he is trying to think, I will just suggest him that, ठीक है, आशीष नरवाल को अभी मत लाइए. Even the next match, it's okay because you are in the top 3. You do not have to bother about that's a surrender rate. And Ashish Malik as a defender, only that much he can do in a raid. That's fine. Yeah, it's another all out. But just talking about that Ashish Narwal factor, if Mohit Hooda can be suggested that even in the next match, suggest him very strongly, Harshit, if possible. Let him not bring in Ashish Narwal. Let him get completely recovered. What will happen is, one, he will get a lot of time for recovery, and two, what will happen is this Pariyar Panthers unit will get another match to show their confidence, and that is what Mohit Hooda should be looking at. If he brings back Ashish Narwal immediately in the next match, thinking that अरे ये तो बहुत बड़ी हार हो गई, ये तो हमारी बेइज्जती हो गई and all that, and then when Ashish Narwal comes back immediately, what happens? All these lads who have performed so very bad today, I can use the word bad today because yes, it is a bad performance. Let me be honest and not talk like Harshit with all the makhan and maska. But yeah, when these lads who performed very bad today, they will get another opportunity in another match to show what they can do better. That is what we want to see. Can that happen, Harshit? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा और इस बार भी देखिए 55 नंबर जर्सी सुल्तान ऑफ सरप्राइज ने यहाँ पर बहुत अच्छा ब्लॉक किया था और बिल्कुल आपने सही बात की वहाँ पर कि आशीष नरवाल। परंतु देखिए नवीन, मैं नवीन शर्मा को जरूर देखना चाहूंगा। आप कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए मैं नवीन शर्मा को देखिए एक वहां पर इस बार अंकित सरप्राइजेस कह रहे हैं कि चलिए क्या अभी भी इस मुकाबले में थोड़ा सा समय अगर अधिक होता तो मैं मुकाबले में अपनी टीम को एक बार इसी मुकाबले में वापसी कर लेता। ये शायद पॉइंट आउट अगर कैमरे की तरफ होता तो ये शायद कमेंट्री में हमें भी बता रहे होते कि देखिए मुझ में वो दम है, हमारी टीम में वो दम है। पेरियार पैंथर्स क्या इस बार मल्टीपल रेड पॉइंट्स लेकर आ पाएगी, देखना होगा। ये सुपर रेड, ये है वो सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस, ये है इनका कार्य। पिछला मुकाबला इनके लिए आउट ऑफ फॉर्म रहे थे, परंतु इस बार रेड और डिफेंस दोनों में अब लगातार पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस। When Sanjay Dul went in for the dash, what he really smartly did was going in for the dubki and in the dubki reaching the midline, and this is not what we really want to see. Once again, a big error from Anish. Yeah, he's been looked good in patches, but not when Ashish Malik is raiding. He's not even stepped on the balk line, and this is what you do. But yeah, Ankit, in that previous raid, he made sure the dubki came in towards the midline, and then he crossed upon under the chain, and that's why the 3 points was very nice. And Krishan Dul has been also sent out on the bench, but somewhere it is too very late. It's too very late in the match. But let's go back to that discussion, Harshit. Yeah, we will want Naveen Sharma to be on the mat for sure, because that becomes somewhere a strong advantage for the very, very weak defense that has been explained itself today, because they really want to understand what they did, because we could not explain what this defense did for the Pariyar Panthers. Yeah, when Naveen Sharma comes back with Ankit around, that becomes one good point in the next match. But I really want to see Ashish Narwal rested.
एब्सोल्युटली, आप यही देखना चाहेंगे वहां से लगातार प्रदर्शन की। आशीष नरवाल जरूर थोड़ा सा अगर उन्हें इंजरी से भी कवर करने के लिए टाइम चाहिए या फिर निश्चित तौर पर अगर वो मुकाबले में अपने अंदाज में प्रदर्शन जारी रखना चाहते हैं। और देखिए क्या नवीन, जिस तरह से हमने लगातार चर्चा की, पहले चलिए इस बार पहले अंकित के इस रेट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक बार फिर से नंबर 1 जर्सी को अपना शिकार बनाएंगे और अंकित अब एक बेहतर खिलाड़ी के तौर पर नजर आए सेकंड हाफ के सेकंड हाफ में कह लीजिए आप। देखिए 12 पॉइंट ये भी प्राप्त कर चुके हैं, 3 टैकल पॉइंट्स, 9 रेड पॉइंट्स इनके पास हैं। परंतु क्या नवीन एक सोच थोड़ा सा ये भी रहेगा पेरियार पैंथर्स या उनके कोच का कि लगातार दूसरा मुकाबला यहाँ पर आ रहे हैं। पेरियार पैंथर्स के विरुद्ध भी हारे थे। No, that's okay. जी हाँ, No, sorry. Yeah, see, that will always be there. You know, that will always be there. If you are in the topmost of the table in the booster round, and some teams will come back to bite you, that is fine because you're somewhere comfortable in making through to the challenger round, and of course you will be really awarded for being there in the top 3. Extra prize money being awarded for the top 3 teams from the booster round. Ashim Malik says, no, Anish. It was not you. Relax, brother. It was Ashish Umed who have got the touch on. Yeah, Ankit has done well. See, look at this. The running hand touch went in, and it was not Anish, and it was Ashish Umed somewhere was very quiet, and then okay, he had to go back. So Ankit has done well. Once again, a super tackle situation. Dubke, not in the right direction. It should have been in the midline as he was in the previous raid. A super tackle now. Yeah, that's what the coach is saying. Dilbag saying, उसको मतलब वहीं पे पिन डाउन करो, वहीं पे उसको पीछे से करना है टैकल. And Suman ji saying no neck holding. Yeah. जी हाँ, इस बार बिल्कुल आपने सही कहा कि वो डुबकी जरूर थी परंतु वो मिडलाइन की दिशा में नहीं था और मिडलाइन की दिशा में सिर्फ उनका बैक था। तो ये भी जरूर एक जो हमारे सभी युवा खिलाड़ी देख रहे होंगे वो उन्हें जरूर अच्छी तरह से यहाँ पर समझा होगा, अच्छी तरह से पहचाना होगा कि किस तरह से आपके पास जो वेपन्स है उसका आप उपयोग करते हैं। अंकित जरूर वहाँ पर बिल्कुल डीप इन द वहाँ पर टीम में जाकर, और शायद दिलबाग सिंह ये भी कह रहे थे कि भाई वो ज्यादा पॉइंट मत देना, ये बात का भी ध्यान रखना कि आप लोग जाइए जरूर परंतु ये बात ध्यान रखना कि ज्यादा पॉइंट मत दे दीजिएगा। आप ये देखिए पड़े और इनके चेहरे पर ज्यादा मुस्कुराहट देखी नहीं है नवीन मैंने, क्या आपने देखा इन्हें मुस्कुराते हुए मुरथल मैग्नेट से कोच दिलबाग सिंह को? No, see, he's always actually exhibiting right emotions. But somewhere Mohit Huda, I have seen a lot of expressions on him as a coach. Ankle hold. Thank you so much. Says Sanjay Dhul. And look at this. That's all. Job done. Says Dilbag Singh. But Mohit Huda sahab somewhere gets too very emotional. You know, he's a nice man where he exhibits all the emotions, even if he is angry, even if he is happy, and when he is tensed, especially in that super raid, what Ankit put, he was actually standing up and folding the hands saying, okay, just praying if that is a super raid and to get the points. But Dilbag Singh is as cool as that it can get on the face, but he will be having a lot of emotions, I'm sure, inside. But Mohit Huda sahab puts it on his face. That is nice to see. The coach of Pariyar Panthers. जी हाँ बिल्कुल, और दोनों ही कोचेस की यहाँ पर आपने वार्तालाप की जिस तरह से यहाँ पर, और ये भिन्नता है ना, ये सिर्फ भिन्नता आपको यहाँ पर ही नजर नहीं आएगी, ये पूरे भारत में आपको भिन्नता नजर आएगी किस तरह से। ये जरूर चलिए जाते जाते एक मौका होगा पेरियार पैंथर्स के पास, जाते जाते डू और डाई रेड में यहाँ पर शिकार बनाए उमेश पवार का, और उमेश पवार देखिए समय ले रहे हैं, जानते हैं यहाँ पर डू और डाई रेड है परंतु कहेंगे कि चलिए मैं शायद वहाँ पर सेल्फ आउट होना ही पसंद करूंगा या फिर शायद वहाँ पर क्लॉक टिकिंग का इंतजार कर रहे हैं। Yeah, so what a raid, so he did not go in for the point. It is a big win for the Murthal Magnets. 19-point victory, I should say, because that last 1 point should not be 26. Correction, it will be, that's 27 where the raider was out. Umesh Pawar in a do-or-die raid. He did not go in an attempt. So, a 19-point victory. It's a big victory for the Murthal Magnets because they had lost against the Pariyar Panthers. Remember, in the last time, the scores were almost similar, very similar. Pariyar Panthers had won it from 45 to 27, and Murthal Magnets have won it to 46 to 27 now on Pariyar Panthers. 45 to 24 in the last match when they played, and Pariyar Panthers had won it this time. Murthal Magnets get that same score of 46. Right.
Just talking about what was going on in the second half, they did not take the advantage of Krishnan Dul not being on court. Rinku looked too much off color. It is not a very good sign for the Pariyar Panthers, who were actually trying to make a comeback, and Rinku did not utilize Naveen Dul, in fact Krishnan Dul's absence, and then Naveen Sharma missing out in the right corner, of course, was a big miss. But this rate, see, this is what I was trying to tell you, Arshit. Even if Ashu Malik has been tackled there, all credit or all the praises was for Ashu Malik more. Of course, yes, there were praises for the tackle and the defender also, but Ashu Malik was praised more from me and you both. Why? Because of the intention, because of the effort, because of the try that went into it with full-heartedness. You know, that is what Rinku did not do today, and that is why I am feeling very disappointed by his performances. And then Mohit Huda should have brought in Monu Jakar somewhere. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा नवीन, और ये भी एक बड़ा विषय था कि आज रेडर्स को ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले। मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ देखना चाहूँगा, पेरियार पैंथर्स सिर्फ 14 रेड पॉइंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, और नितिन जागलान ने अपना खाता भी नहीं खोला। 12 टैकल पॉइंट्स पेरियार पैंथर्स के पास, 21 वहाँ पर मुरथल मैग्नेट्स के पास, 19 रेड पॉइंट्स वहाँ पर मुरथल मैग्नेट्स, और 6 ऑल आउट पॉइंट्स, यानी कि 3 दफ़ा पेरियार पैंथर्स को ऑल आउट किया। एक अतिरिक्त पॉइंट जरूर पेरियार पैंथर्स को मिला, परंतु नवीन ये भी हम आने वाले मुकाबलों में चर्चा करेंगे इस बारे में। नितिन जागलान ने अपना खाता नहीं खोला, मनोज यादव जो आज कवर डिफेंडर खेल रहे थे, उन्हें अपना खाता खोलने का मौका नहीं मिला ज़्यादा, तो ये जरूर इसे कवर अप करना चाहिए। उनका यहाँ पर होना क्या एक आवश्यक बन सकता था, परंतु चलिए मुरथल मैग्नेट्स एक बार फिर से मौजूद है टॉप ऑफ द टेबल। 10 मुकाबले 9 जीत, एक मुकाबला महज आ रहे हैं। शुरुआत उनके लिए इतनी अच्छी नहीं रही थी बूस्टर राउंड में, परंतु उसके बाद उन्होंने दर्शाया कि सर्वाइवल राउंड की हम टॉप मोस्ट टीम थी, तो हम निश्चित तौर पर भी बूस्टर राउंड से चैलेंजर राउंड में टॉप मोस्ट बनकर ही जाना चाहेंगे। पेरियार पैंथर्स दूसरे पायदान पर। What has happened on the points per match? See, it was 5 for the Pariyar Panthers. Now it has gone down to 4.5. So that is not right. That is what the Pariyar Panthers should be thinking about. Right. Let them think a lot of things when they come back for the next match. I'm hoping Ashish Narwal will not be making a comeback and giving these lads extra confidence. Let's see what Mohit Huda thinks. But shifting our focus to Kaziranga Rhinos. Very important at 12 noon, where they take on Hampi Heroes, and once again Kaziranga Rhinos have that big opportunity to make sure they get into that top 6, which is really crucial going into the challenger round. Only 6 teams will be selected. So see you soon at 12 noon here on Fan Code. I am Navin Shourie, along with me was Harshit Sharma. Thank you so much, everybody.